Hello students, how are you? Okay, enjoying the holidays? बट उसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है. Last period we studied that 4-digit number, 5-digit number, 6-digit numbers, and very few students send me the homeworks. Please do your homework and practice it at home and send me. Okay. Today I am going to teach you the 7-digit numbers. What is introducing 7-digit numbers. Okay. What do we study today? 7-digit numbers. Okay. Now we shall learn about 7-digit numbers. How to learn? Suppose, for example, one 10 farmers borrow 1 lakh rupees each from cooperative bank. For example, if you suppose 10 farmers borrow rupees 1 lakh. How many rupees borrow? 1 lakh rupees from the bank. Okay. Then from the bank. Then how many is the total loan? What is the example? Suppose 10 farmers borrow rupees 1 lakh from the bank. So how many is the total rupees? How can you do this? Okay. So what you have to do? We must find out what is 10 times 1 lakh. आपको क्या करना पड़ेगा? 10 फार्मर्स में बोरो किया ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 टाइम 1 लाख करने पड़ेंगे. 10 टाइम 1 लाख. 10 टाइम 1 लाख. How many टाइम? 10 टाइम 1 लाख. तो what is the amount? आपको मैंने पढ़ा है, अगर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है तो मल्टीप्लाई कैसे करने का है? ओनली नंबर्स 1 1 जा 1. ओके, 1 1 जा 1 और जितने भी 0 है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 1 यूनिट 10 100 प्लेस के बाद कॉमा, फिर 1000 प्लेस के बाद कॉमा एंड देन 10,000 प्लेस. सो 100 10 प्लेस हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूनिट 10 100 1000. याद है आपको? ये 10,000 फिर ये 10,000 देन ये लाख और ये 10 लाख. ओके, like this how many numbers are there now? 1 2 3 4 5 6 7. This is the 7-digit number. Okay, now you got the 7-digit number. तो हम लोग इसको कैसे रिपीट करेंगे? 10 लाख. कैसे? 10 लाख डायरेक्टली 10 लाख. पहले कैसे रिपीट करना है? 10 लाख. Understand? Okay. Now, just we read 10,000. आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था. समझो जैसे 7 फॉर एग्जांपल 73,000 73 17 लाख 35,640. तो ये होता है यूनिट 10 100 1000. ये डायरेक्टली हम लोग 35,000 बोलते हैं और यहाँ पे क्या बोलते हैं? 73 लाख. ओके, 73 लाख 35,640. ऐसे रीड करते हैं नंबर. तो ये वाला नंबर कैसे रीड करेंगे? हाउ टू रीड दिस नंबर? डायरेक्टली 10 लाख 10 लाख. ओके, हाउ टू रीड दिस नंबर? 10 लाख. 10 लाख मतलब 10
lakh. Okay, like this you have to read this number. Now study this number, understand this much. Okay, suppose one farmer 10 farmers borrow 1 lakh rupees from the bank, तो इसका आंसर कितना आता है 10 lakh. 10 के ऊपर 60, 1 2 3 4 5 60, that is 10 lakh. So this number is 7 digit number. Understand? तो रीड कैसा करने का है 10 lakh, डायरेक्टली 10 lakh, 10 lakh. Okay, understand? Now look, for example, first example is given here कि how to read these numbers. First one is how to read the 7 digit number. Write the 7 digit number in words. ओके, हमें अब ये कैसे करना है वर्ड्स में लिखने का है. Read this number and write in a word. How to write this? For example, first one is given here. First one is 25,79,899. ये नंबर कैसे रीड करना है 25 यूनिट 10 100 1000 एंड lakh. तो कैसे रीड करेंगे 25,79,899. Okay, how to read this 25 lakh 79,000 899. क्या 800 899. Okay, समझो सेकेंड नंबर इज गिवन हियर. सेकेंड नंबर क्या दिया है आपको यहाँ पे नंबर 2 इज 91,006. How to read this number? How you can read this number? Third number is 63,988. Okay, after that है fourth number is 88,400 and last one है. Okay, these four numbers are write the 7 digit number in words. आपको words में लिखना है. तो how you read this number? ये यूनिट 10 100 1000, ये दो नंबर 1000 में हो गए और ये lakh. ओके, याद रखने का है. तो 91 lakh 91 lakh. देखो अभी 91 lakh 1000 प्लेस पे 0 है, 100 प्लेस पे भी 0 है, 10 प्लेस पे भी 0 है. सो 91 lakh and 6. How to read this number? 91 lakh and 6. What? 91 lakh and 6. Because there is 0 in these numbers in place. 10,000 place, 100 place, 10 place, there is 0. So you read this number like 91 lakh and 6. Clear? Look this number. Here also you need 10, 100, 1000. ये दो नंबर 1000 और ये lakh place पे है.
Okay, here also 1000 place पे 0 है. So how do you read this number? 63 lakh 63 lakh. No number is on 1000 place. 988. 988. Okay. हाँ, understand? फोर्थ नंबर देखो, यूनिट 10, 100, 1000 place and lakh place. Okay, so 88 lakh, there is 0 on the 1000 place. 400, आगे तो 0 है. So how do you write this? 88 lakh, sorry, 88 lakh. 1000 प्लेस में कुछ नहीं है. 400, FOUR 4 और HUNDRED 100. Clear? Look, once again I am going to explain you this. Look here. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? Introducing 7-digit number. तो question is that write the 7-digit numbers in words. Okay. First number is 25,79,899. आपको समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैंने इसके ऊपर लिखा है. ये 9 यूनिट प्लेस पे है, ये 9 10 प्लेस पे, 800 प्लस 79,000 प्लेस पे, 25 लाख प्लेस पे. So how to read this? 25 lakh. Look here. 25 lakh 79,000. TH मतलब 1000. 79,899. Okay, 99. Clear? Next number is 91 lakh 6. 91 lakh and 6. तो 6 प्लेस यूनिट प्लेस पे 6 है. 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, there is no number and directly 91 lakh. How to read this number? 91 lakh and 6. Okay. Now next number is 63 lakh 988. 8 is a unit place. Second 8 is 10 place. 9 is 100 place. There is no number on the 1000 place and 63 lakh. So how to read this number? 63 lakh. L मतलब lakh. 63 lakh 0 1000. 1000 तो कुछ नहीं है. So directly 988. Okay. And last number is 88 lakh 400. So unit place and 10 place पे 0 है, 100 place 4, 1000 place 0 and lakh place पे 88. How to read this number? 88 lakh 400. Okay, 400 and there is no number on the 10 and unit place. Clear? Understand? Okay. Now next question is, what is the next question? Next question is that write the 7-digit number in figure. Digits number in figure. For figures, first one is, for example, 72 lakh 95 and 95. Okay. Second number is given here, 70 lakh 20,000
2300 2300। तो अब ये नंबर्स कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट दिस नंबर? 88 lakh 400 and fourth one 81 lakh 6 7. Okay, 81 lakh and 7. So look here. These are the four numbers given here. Okay, four numbers are given here. How to write this number in figure? Okay. Look at the board. First of all, you make a chart here. Like this. You need 10, 100, 1000 and lakh. Only 5 groups I will make here. Okay. $72 lakh and 95. Okay, 72 lakh 95. So middle 1000 and 100 place number is there. So you write here 0. Okay, 72 lakh 0,000 and 095. 72 lakh 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 digit number. Okay, 72 lakh and directly 95. So these numbers are not given here. You have to write here 0. That is 72 lakh 95. 7 digit number होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Second number क्या है? 70 lakh 2000 and 100. देखो 72 lakh 70 lakh 70 lakh 2000 ईयर है 2000 क्योंकि 10,000 प्लेस पे कोई नहीं है कि 0. ओके 2300 ओके. नेक्स्ट नंबर इज 88 lakh 400. 88 lakh और डायरेक्ट 400 100 के प्लेस पे 400. No number is here. You write here 0. 81 lakh and 7. 81 lakh and लास्ट में 27. So मिडल वाले प्लेस पे क्या लिखना है आपको? 0. That is there is no number. Like this you have to write your numbers. Okay. Once again, first of all, you make a chart like this. You need 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Because we are going to introducing the 7 digit number. So 72 lakh and 95. Right? 95. So middle वाले नंबर जो है वहाँ पे हमें क्या लिखना है? That is 0. Next 7 lakh 2300. 70 lakh 70 lakh 2000 प्लेस पे 2 and 300 प्लेस पे 300. 30 के नंबर्स क्या है? 0. नेक्स्ट 88 lakh 400. 88 lakh and directly 88 lakh. Okay, 400 and remaining प्लेस पे 0 लिखना. 8
81 lakh 7. 81 lakh and direct unit place the 7. Okay, clear? You have to do this in your notebook and send me on my number. I will give you the homework. Okay, thank you.